So again, because we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Bank and banks' health are equally important for looking at the economy and its situation at any point in time. Compare globally, 4,000 banks in China are reportedly on the verge of going bankrupt. I want that to be taken cognizance of by the honourable members. In India, the gross non-performing assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a 6-year low of 5.9% in FY22. So China, 4,000 odd banks are on the verge of going bankrupt and our NPAs are improving. Sir, again on government debt. Government debt is one of the important criteria with which you measure the economy. The debt to GDP ratio of many countries are in triple digits. And that includes Japan, Greece, Italy, Bhutan, Singapore, US, Portugal, Spain, France, Sri Lanka, and Canada. Whereas the central government very consciously has controlled its debt, and it is at 56.29% of the GDP at the end of 21-22, compared to 59.9% pegged in the revised estimates for that year. So even from the revised estimates, we have brought it further down. So even when comparing the general government debt, which means the centre and the states, India is in a far better position than its peers. According to the IMF data, it's not me saying it, with a general debt to GDP ratio of 86.9, which includes both centre and states. So I just want to draw the attention of members. So globally, if the situation is pandemic, Russia, waves, second wave, third wave, and the Ukraine conflict and the disruption in the supply chain, if globally each country is in this situation, India's position, I've just given you some few comparisons. Today, sir, this morning, we have announced the GST collection for the entire month of July. July 22, we have garnered the second highest level ever since the introduction of the GST, which is 1.49 lakh crores. Second highest. And compared to the last year, this is one of the highest amount. This year in April, you may be aware, I'd like to gently remind, in April 2022, it was 1.67 lakh crores, which was the highest reached. Now we've got in July 22, the second largest, which is 1.49. This is the fifth consecutive month that collections have been above 1.4 lakh crores. GST collections have been above 1.4 lakh crores consecutively for 5 full months. So the Manufacturing Purchasing Managers Index, which has also come out only in the morning, I think, and it is at 8 months' highest number of 56.4 for July. So the trend for output and new orders are strengthening, so the economy is really getting even more robust. The PMI rose from 53.9 in June. I said it is 56.4 in July, well above the 50 level, which is what shows it separates that there is no addition if it is below 50, but it has remained at 50 level, separating growth from contraction for a 13th month in a sequence. So India's 8 infrastructure sector, all of them grew in double digits for the second consecutive month in June. Data released for the month of June showed the core sector
grew at 12.7% in June year-on-year. So strictly speaking, sir, Indian economy in every one of these aspects is showing very positive signs. I remind myself about the line Honorable Member Supriya Sule said, you know, it's enough, you can't be going on talking about earlier days. Now you've had enough number of time. She compared also very untypically to a married woman who enters the house. She gets to be a part of that house and you don't anymore say we are new, whereas what has been there and all that. But in these kind of situations, sir, where constantly questions are based not so much on facts. I'm not talking about Supriya ji alone, but in general, when facts will have to be reminded, because the way in which questions are being asked as though it didn't exist earlier. Even now, the leader of opposition said, please accept that inflation existed before the pandemic also. Inflation exists, sir. At what level is the question? So conceding to that point, I have no difficulty. Inflation exists. But at what level? And that is why, if you will pardon me, Honorable Member, I would like to go back to recalling. Let's not forget, for a small taper tantrum, I'm saying small today, of the Fed of 2008, the problem continued till 13, that the Indian economy became a fragile 5 country. But what are we today in? Pandemic, second wave, Omicron, India, Russia, Ukraine, supply chain, even today, largest supply component suppliers around in China, still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. Oh yes, sure, I will speak. So, just gently, some bullets will have to be remembered. हमें याद करना आवश्यक है, क्योंकि बार-बार 8 साल पहले का यूपीए का क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, बात करने का आवश्यकता नहीं है. हम बोल सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, शायद और बेहतर कर भी सकते हैं, मगर हम क्यों बार-बार उसको जिक्र करना चाहिए? क्योंकि उसका इंटेंसिटी क्या है? एक ही था पैंडेमिक भी नहीं है, वो एक फेड का प्रॉब्लम था, यूएस रेट बढ़ा दिया, उनका लिक्विडिटी कंप्रेस करने के लिए कोशिश किया, वो सिर्फ एक प्रॉब्लम था, उसके असर इतना पड़ा कि भारत देश फ्रजाइल 5 देश में एक हो गया था 2013 में. मगर अब तो हम झेल रहे हैं पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, चाइना में जगह जगह पर लॉकडाउन, और आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मल सी तक नहीं पहुंचा. फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए. इसीलिए मैं उदाहरण कोट करना चाह रही हूं सर. रिटेल इन्फ्लेशन वॉज मोर देन 9%, अभी 7% है. 7 से कम होने के ही प्रयत्न हर बार हुआ है, 2 बार उसका अच्छा नतीजा भी पहुंच गए. मगर 9% से ज्यादा 28 मंथ्स को आप एक इकट्ठा करके देखेंगे, उसमें 22 मंथ्स में 9% से ज्यादा था. यूपीए के कार्यकाल में 9% से ज्यादा. अभी जब हम 7 में हैं और 7 से नीचे कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया इन्फ्लेशन, आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन. 22 मंथ्स को आपने 9% से ज्यादा रखा इन्फ्लेशन. वो याद करिए ना प्लीज एक बार. फिर इन्फ्लेशन उसी समय में डबल डिजिट्स में गया, 10% से ज्यादा में गया. 9 बार यूपीए सरकार के समय 9 बार डबल डिजिट में था इन्फ्लेशन. वो भी याद करना चाहिए. जब हमें मांग रहे हैं कि 7% से कम होने क्यों नहीं हो रहे, करो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे. मोदी जी ध्यान रख रहे हैं उन सब के ऊपर, जरूर करेंगे. मगर आप 22 मंथ्स में
दानिश जी, आप उठकर सही प्रश्न पूछे। ओ ठीक है सर। उनका नाम अगर दोबारा उठेंगे तो नाम ठीक है सर। डिलीट कर दो सर। इसीलिए हमें चुना, इसीलिए मोदी जी को वोट मिला, और इसीलिए कि वोट भी मिला, स्टेबल गवर्नमेंट भी मिला, 7% से नीचे ही रख रहे हैं हम इन्फ्लेशन को। जो जनता के ये एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार वोट दिया, उसके अनुसार ही हमारा डिलीवरी भी हो रही है। याद रखना चाहिए सर, इतना तेज आकर के नहीं क्या चल रही है, 7%, 22 मंथ्स 9% से ज्यादा, 9 बार डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ये करने वाले सरकार थोड़ा सोच समझ करके हमारे ऊपर आरोप डालना चाहिए। ठीक है। इससे ज्यादा मैं इन्फ्लेशन के ऊपर और बोल सकती हूं सर, मगर समय भी हो रहा, आगे बढ़ती हूं। अरे 7 से कम हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। समस्या है। माननीय स्पीकर सर, मैं दोबारा, क्योंकि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदिर जी एक, हाँ ठीक है, पार्टी कांग्रेस पार्टी के लीडर, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट का नाम लेकर के बोले कि देखो इन्होंने ऐसे आपके खिलाफ बात की है। सर, इनको आदत है एक आध इकोनॉमिस्ट का ही नाम लेंगे, बाकी दुनिया में इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं लेंगे। हाँ, उनके आदत है, और ये भी है कि उन्हीं इकोनॉमिस्ट के बारे में, उनका टिप्पणी के बारे में ही जिक्र करते रहेंगे, जैसे अभी एक इकोनॉमिस्ट का नाम लिए। मगर कौशिक बासु जी के नाम लिए, और हाँ रघुराम राजन भी है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया। मैंने सोचा एक बार रघुराम राजन जी का बयान एक बार ध्यान दिलाएंगे। हाँ, वो भी सही बात है, खुद अधीर रंजन जी इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। सर, शनिवार के दिन रघुराम राजन जी ये बात बोले कि आरबीआई ने अच्छा काम किया। RBI has done a good job in increasing the foreign exchange reserve in India, insulating India from problems being faced by neighboring countries such as Pakistan and Sri Lanka. So Pakistan, Sri Lanka का जो problems है, वो problems हमें नहीं होने देना चाहिए। ऐसे करके RBI ने अच्छा काम किया है, ये उनका टिप्पणी। और ये भी है, differentiating India from its vulnerable neighbors, Sri Raghuram Rajan further added that New Delhi is less indebted, calling it a good sign. मैंने अभी डेट टू GDP फिगर्स पढ़ा, नंबर्स भी पढ़ा आपके सामने, उसका रघुराम राजन जी भी जिक्र कर रहे हैं, जो न्यू दिल्ली के सरकार डेट को कम रखना अच्छा काम किए हैं।